Hello everyone. In this video we will discuss about service process. जैसे हमें पता है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, physical evidence, people and process. So today we will discuss about the final P, that is process. तो क्या होता है सर्विस प्रोसेस? सर्विस प्रोसेस को समझने के लिए we will basically discuss two terminologies, that is service mapping and flow chart, or we can say process mapping and process flow chart, and we will also try to understand this with the help of an example. So what is process flow chart? Now process flow chart is also known as service flow or process flow chart. Basically it is a diagram which will give you an explanation of how the service would be delivered, all the activities that is involved or all the steps that is to be taken in a sequential order. एक सर्विस को डिलीवर करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज एक सर्विस प्रोवाइडर परफॉर्म करता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जब उसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो उसे हम लोग प्रोसेस फ्लो चार्ट कहते हैं. से फॉर एग्जांपल वी विल डिफाइन द स्टार्ट पॉइंट एंड वी विल डिफाइन द एंड पॉइंट. इन बिटवीन जितने भी स्टेप्स हमें लेने हैं वो सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक विजुअल फॉर्मेट में दिखाया जाता है. तो ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज जब भी आप कोई भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम्स होती है, आपको मल्टीपल टीम्स को मैनेज करना होता है. यू हैव टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट टाइम फॉर अ डिफरेंट टाइम फ्रेम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू द एग्जीक्यूशन टू द इवैल्यूएशन टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इसके लिए एक फ्लो चार्ट होना बहुत जरूरी होता है. फ्लो चार्ट इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, बट इस एग्जीक्यूशन में लाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यू नीड अ हार्डवेयर, यू नीड अ सॉफ्टवेयर, यू नीड अ सर्विस, यू नीड अ सेटिंग्स एंड यू नीड अ एप्लीकेशन. तो जब ये सारी चीजों को हम लोग एक विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सर्विस मैप. सर्विस मैप इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, of the atmosphere, the environment, the elements in organizing and delivering the services. A service map basically communicates the entire process in one particular visual format. It will include your hardware, it will include your software, it will include your settings, it will include your services, and it will also include your customers. The 5 main things which are covered under the service map, I once again repeat, the 5 components which are considered when you will construct or structure your service map is your hardware, your software, your settings, your services, that is service or support service or applications, and your customers. Now to understand this, that is the service process, how it works, let us take an example of a Swiggy. We will understand this from both point of view, that is from the customer point of view and from the Swiggy point of view. Obviously it starts when the customer wants to order something. As it is always said in services, both the service provider and the service customer, they are the co-producer. So Swiggy has to develop an app or a website and a customer has a need, so he has to create his profile on the Swiggy platform. Say for example, customer ने सबसे पहले, we will start from the beginning, Google Play Store में एक customer गया, उसने Swiggy का ऐप डाउनलोड किया, अपनी प्रोफाइल सेटअप कर ली. After successful verification of the mobile number and email, then he will log into his account. Once the customer has logged into the account, he needs to provide his location. एक बार लोकेशन दे दी गई, नेक्स्ट स्टेप इज जितने भी नियर बाय होटल्स है, दैट स्विगी विल पुल इट एंड आपको सारे होटल के मेनू कार्ड्स आपको मिल जाएंगे.
can browse through the menu card and you might have some promo codes or the coupon codes. Once you have selected your order, you go into the cart, and while doing the payment you can apply those promo codes. Next, once you have placed the order, अभी तक जो था वो कस्टमर प्रोसेस फ्लो था, यहाँ पे स्विगी का रोल सिर्फ इतना था कि स्विगी हैज टू प्रोवाइड यू अ यूजर फ्रेंडली प्रोफाइल सेटअप एंड वंस यू गिव द लोकेशन, उसे नियर बाई जितनी भी होटल्स है उसका पुल करके डेटा, उसका मेनू कार्ड आपको अवेलेबल करना उसके ऐप पे। वंस यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, नियर बाई जो भी स्विगी एग्जीक्यूटिव रहेगा उसको वो ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगा वंस द रेस्टोरेंट्स हैव कंफर्म द ऑर्डर। वंस योर पेमेंट इज सेट अप, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, द ऑर्डर इज कंफर्म्ड विद द रेस्टोरेंट. Restaurant will give the estimated time to Swiggy. Swiggy will calculate 2 times. Swiggy will calculate 2 periods. एक टाइम पीरियड जो होटल लेगी आपका मील प्रिपेयर करने के लिए, अनदर टाइम पीरियड होटल से लेके आपका लोकेशन, दैट इज डिलीवरी एड्रेस, यानी कि ट्रैवलिंग टाइम. सो व्हाट स्विगी विल डू, स्विगी विल एड अप the order preparation time and the order delivery time, और उस बेसिस पे वो आपको देगा total order time. And if you notice that जब भी आप स्विगी पे ऑर्डर करोगे, they have this special feature called as order tracking. ठीक है, let us Swiggy, your order is finalized, then the Swiggy executive is waiting. Once he collects the order, you will get a pop-up. Then he also shows the map. Swiggy also shows you the map कि वो कहाँ तक पहुँचा है और कितने टाइम में पहुँचेगा. Not only that, along with that, you will also get the Swiggy executive. You will get an SMS जहाँ पे Swiggy executive की सारी details दी गई होती है. That is उसका name, उसका contact number, उसका vehicle का registration number, etc. So this is how Swiggy as a process works. So when we talk about the service process, we are talking about all the activities that is performed by the service provider in a step-by-step manner. We talked about service mapping and flowchart. Flowchart is basically a blueprint, a diagram in which all the activities are showed in a sequential manner. And a service map, it is basically visualization of the service process, in which we include hardware, software, settings, then services and customer. We discuss how Swiggy works both from customer point of view and from Swiggy employee point of view and from the Swiggy firm point of view. Even if you want to understand service mapping, the 5 elements, say for example for a restaurant, when you are talking about hardware, then all the interior, the furniture, the podium, the kitchen equipments, they are the hardware. When we are talking about the software, we are talking about all the recipes that is chefs have, all the menu cards which are there in the electronic form. Then we are talking about the customers. Then customers also, they have different set of customer: loyal customer, happy hour customer, VIP customer, reserve customer, walk-in customer, takeaway customer. We are talking about application. Then how soft, humble, cordial, polite, the soft skill of the service personnel, order taking, order delivery, the presentation of your dish, and the support services. So this was all about service process. In the next video, we will discuss some another topic related to service marketing. Till then, everyone stay home, stay safe, take care. Thank you everyone.